Now we are going to study Newton-Raphson method. हम न्यूटन रेप्सन मेथड देखेंगे. न्यूटन रेप्सन मेथड क्या होता है? वी आर गोइंग टू सी दिस. इट्स अ वेरी इजी मेथड आल्सो. द डेरिवेशन इज आल्सो वेरी इजी. Just basic thing you should remember, this is a derivative method. Here we are going to find the derivations, or you say derivatives or differentials we are going to find. You see, it is also a method to find the root of the equation f of x equals to 0. Here we use the derivative of the function to remove the constant. This method is usually converges faster than the bisection or a regular falsy. I'll show you how this regular that Newton falsy, that Newton-Raphson method is working. You see, let's say if you have taken this curve. Now there is one point on this curve. Now what we were doing in the secant method, we are taking these 2 points and we are making a secant. Now it cut somewhere on the graph. It cut somewhere on the graph here, and this is the third point you are getting. Let's say this is x2. After that, what you are doing, you are taking this point and this, let's say this is x1, this is x2. Now again what you are doing, you have taken and making another secant, and then it will cut again the x-axis, then you are getting another point. This is secant method. In regular falsy, what you were doing, you were checking the condition only कि अगर मैं f of x1 and f of x2 ले रहा हूँ, is it negative or is it positive? If it is negative, then we are going to go with these 2 points. If it is positive, we will take another set of points. Let's say x1 or f of x3 is coming positive, so we are not taking x1 or x3 as a point. This is regular falsy. Now in Newton-Raphson, what we were doing is, let's say this is a graph. हमने ये ग्राफ लिया और यहाँ पर एक पॉइंट लिया. ये पॉइंट लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक डेरिवेटिव ले रहे हैं. यहाँ से हमने क्या किया, एक टेंजेंट बनाया. दिस इज अ टेंजेंट वी हैव ड्रॉन. पॉइंट लिया हमने कोई x0, वहां से हमने एक टेंजेंट बनाया. इसने दिस हैज कट x एक्सिस को काटा. लेट्स से दिस पॉइंट इज x1. यहाँ पर काटा, यहाँ पर फिर से हम पहुंच गए, इस पॉइंट पर आए. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट अगेन वी आर ड्रॉइंग वन मोर टेंजेंट. लेट्स से ये यहाँ पर है, this is x2 point. Now from this point we have again draw one more tangent. Now we have reached another point. We have reached x3, and this way we are going closer to this root of the equation. So here what we were doing, despite of making secant, हम secant ना बनाते हुए, what we were making now, tangent to the curve. Through this tangent we are finding we are coming closer to the root of the equation. Done. Now we are going to see the derivation of it. Newton-Raphson method. It is also a method to find the root of the equation f of x. We have seen this. ये method bisection और regular falsy से ज़्यादा तेजी से converge करता है. Now we are going to see the derivation of it. हमें पहले से ही पता है, there is a equation हमने लिया है, वो है a0 x plus a1. अब किसी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो हमने माना f of k x is equals to a0 xk plus a1. a0 xk plus a1. यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये डेरिवेटिव आया f डैश k इक्वल्स टू a0. ये डेरिवेटिव आया. नाउ डन, डेरिवेटिव आ गया. इस a0 का वैल्यू हमने ऊपर वाली इक्वेशन में रख दिया, तो यहाँ से हमें a1 का वैल्यू मिल गया. अब xk प्लस 1 को हमने क्या माना, इट्स अ रूट ऑफ द पॉइंट, तो रूट ऑफ द फंक्शन. तो f ऑफ k प्लस 1 ये 0 हो गया, ये 0 लिख दिया. अब 0 a0 xk प्लस 1 a1 लिखा. ठीक है. नाउ xk प्लस 1 का वैल्यू निकाला, xk प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस a1 डिवाइडेड बाय a0. यहाँ से xk प्लस a1 का वैल्यू रख दो और a0 का वैल्यू रख दो, वॉट एवर इज देयर, ये दोनों कट गए और हमारे पास जो वैल्यू आई वो ये फॉर्मूला बनकर आया xk प्लस 1 के लिए.
is equals to xk minus f of k divided by f dash k. This is very important formula. f dash k का मतलब क्या है? Derivative. This is derivative. This is function. चलो, thank you.